Okay, Assalamu alaikum students. So today we are going to see IGCSE Physics, May June 2025, Paper 2, Variant 1. This is a 45 minutes paper. Let's start with that. The speed time graph. Okay, so let's zoom in a bit. I guess this is enough. Perfect. The speed time graph for a racing car is divided into four sections P, Q, R, and S. The car starts the race but soon crashes into a wall of tires. कार आपकी रेस स्टार्ट करती है बट सून क्रैशेस इनटू अ वॉल ऑफ टायर्स ओके which sections of the graph show that there is acceleration that is changing हमने बताना है कौन सा ग्राफ के sections are showing a changing acceleration बेटा हमने बताना है कि कौन से ग्राफ के सेक्शंस ऐसे हैं जो चेंजिंग एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं नाउ डू यू रिमेंबर दैट ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ is equals to what? Gradient of a speed time graph is equals to acceleration, है ना? Now, where is the gradient changing? Can you realize P तो एक horizontal line है. यहाँ पे आपका gradient क्या होगा? Zero. It is not changing. It is constant. Then can you realize Q is a curve? Q is a curve. इसका मतलब क्या है? Q का gradient changes या Q का gradient is changing. If the gradient of q is changing, the gradient of a speed time graph is acceleration. Acceleration might also be changing. Any other such section of the graph? Yes, if you analyze this section R. बेटा अगर आप section R को analyze करो, this is also a curve. That means your gradient changes. If your gradient changes, that means your acceleration also changes in region R. Both Q and R में आपकी acceleration change हो रही है. C is your answer. Perfect. Let's move ahead. The diagram shows the four forces acting on an aircraft in a flight. Which arrow shows the direction of resultant of the four forces? Okay, so you have to basically see कि कौन सा arrow जो है resultant force की direction show कर रहा है. Can you realize the upward force is 120 kilonewton? The downward force is 60 kilonewton. Vertical direction में what will be your resultant force? Your upward force is 120, downward force is 60. Vertical direction में आपकी क्या होगी resultant force? 60 kilonewton acting upward. In the rightward direction, you have a force of 60 kilonewton. In the leftward direction, you have a force of 40 kilonewton. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी 20 किलो न्यूटन लाइक दिस ओके बट यू हैव टू टेल द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स नाउ बच्चों कैन यू रियलाइज दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर what will you do you will take the 20 kilonewton vector to the top side बेटा 20 kilonewton वाले वेक्टर को टॉप साइड पे ले जाओ इस तरह Now, can you realize the head and tail are connected together? Head to tail will satisfy हो रहा है. ये आपका head है, ये tail है. This is your head. Can you mark the resultant vector? Yep. This is your resultant vector from the tail to the head. B is your answer. Simple. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे. The diagram shows two metal blocks X and Y suspended from identical force meters X and Y that have identical dimensions. Okay. आपके पास एक्स और वाई जो हैं वो सस्पेंडेड हैं फ्रॉम आइडेंटिकल फोर्स मीटर्स और एक्स और वाई की डायमेंशंस आइडेंटिकल हैं x and y have identical dimensions that means what their length breadth and height are same perfect which statement about x and y is correct बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो x का न्यूटन मीटर पे रीडिंग क्या आ रही है 2 न्यूटन y की न्यूटन मीटर पे रीडिंग क्या आ रही है 3 न्यूटन परफेक्ट y की न्यूटन मीटर पे रीडिंग आ रही है 3 न्यूटन x की 2 न्यूटन आ रही है which statement about x and y is correct they have different volumes नहीं different volume वाले ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे why because they have identical dimensions identical dimensions का मतलब क्या होता है बेटा same length breadth and height so that means they have the same volume they have the equal volume
but they have different weights. How do I know that? मुझे कैसे पता चला कि इनके different weights हैं? Because they are showing different readings on the Newton meter. Let's further move ahead. A girl has a piece of gold necklace. Which apparatus does she need to find the density of the gold? Density का क्या formula होता है बेटा? Density is equals to mass over volume. How can you find the mass? Using a beam balance. Volume कैसे find कर सकते हो? Using a measuring cylinder. C is your answer. If you have both these things, you can easily find out the density. Let's move on to question number 5. A spring has a length of 25 centimeter when a load of 2 Newton is suspended from it. The spring then has a length of 35 centimeter when a load of 7 Newton is suspended from it. What is the spring constant? बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट के का क्या फॉर्मूला होता था? चेंज इन एफ ओवर चेंज इन लेंथ, या पे चेंज इन एक्सटेंशन. आप 2 न्यूटन से 7 न्यूटन पे जा रहे हो, व्हाट इज योर चेंज इन फोर्स? 5 न्यूटन. आप लेंथ ऑफ 25 से 35 जा रहे हो, व्हाट इज योर चेंज इन लेंथ? 10 सेंटीमीटर. 5 न्यूटन की चेंज इन फोर्स है. व्हाट विल बी योर स्प्रिंग कांस्टेंट? 0.5 Newton per centimeter. B is your answer. Let's move on to question 6. The diagram E till H show a block of wood on a frictionless surface. Perfect. In each diagram, the block has two forces acting on its sides. Which diagram shows the block in equilibrium? अच्छा जी, कौन सी डायग्राम शो कर रही है द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम? बेटा इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस होती हैं. रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो and resultant moment should be equal to 0. Okay, let's take diagram E. Can you realize that this middle point is your pivot? Your force on the right is 2 Newton, your force on the left is 2 Newton. Resultant force becomes 0. बेटा अगर राइट पे 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेफ्ट पे 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी. बिकॉज राइट पे भी 2 लग रही है, लेफ्ट पे भी 2 लग रही है, दे विल कैंसिल आउट. What about resultant moment? Can you realize that this 2 Newton force will rotate the object in clockwise direction? This 2 Newton force will also rotate the object in clockwise direction. तो बेटा मोमेंट सिर्फ किस डायरेक्शन में है? सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. Hence, resultant moment is not equal to 0. Now, if you have a keen eye, अगर आप थोड़े से अक्लमंद हो ना, you will realize one thing. If E is not in equilibrium, every option that includes E, will get cancelled out. What is the remaining option? D. Simple. Easy peasy, and you can verify as well. बेटा जी में क्या आप रियलाइज कर सकते हो? राइट साइड पे 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेफ्ट साइड पे 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है. रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स 0. And if this is your center point or pivot, your resultant moment also becomes 0 as both the forces are passing through the pivot. Same for H. There is a 2 Newton force acting on the right, 2 Newton force acting on the left. Resultant force क्या हो जाएगी? 0. Since both the forces are passing through the pivot, resultant moment भी आपका 0 हो जाएगा. This is also in equilibrium. This is also in equilibrium. D is your answer. Which statement is not correct? The momentum remains conserved. Okay. The impulse is equals to the change in momentum. That is also okay. C is incorrect. Force is not equal to change in momentum into time. Force किसके equal होता है? Change in momentum divided by change in time. Okay. A force acting on a ball causes its motion to change. ठीक है, एक फोर्स लगी है बॉल पे जो आपका मोशन चेंज करती है. फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? रिजल्टेंट फोर्स is equals to ma. This force stays constant. Okay, force आपकी constant रह रही है. What makes the force produce a greater change in the motion of the ball? अच्छा जी, अब आपकी फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट रह रही है. परफेक्ट. If your force remains constant, can you bring the mass to the downside? Yep. If your force is remaining constant, you can replace this resultant force by a proportionality sign. 1 over m is inversely proportional to acceleration. Now, if you decrease the total mass of the ball, your total acceleration increases. You are now producing a greater change. A is your answer. Simple.
आगे बढ़ते हैं बेटा. A farmer has two carts, okay. The carts have the same weight, okay. But one has four narrow wheels and the other has four wide wheels, okay. Which cart will sink less into soft ground and what is the reason? बेटा प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता था? फोर्स ओवर एरिया. Since both the carts have the same weight, your force will be constant. That results in what? Pressure is inversely proportional to area. Since the wider wheels have a larger area, the pressure of the wider wheels will be less. D is your answer. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं जी. What do we have further? Let's see. आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में. A hot gas and a cool liquid are at the same pressure. Okay. Which row describes the separation and motion of the particles of a hot gas compared to a cool liquid? Hot gas में क्या होगा? The separation of gas particles is greater than the cool liquid. Yep. And what will be the motion of the gas particles? Since the hot gas is at a higher temperature, the molecules will possess higher kinetic energy. They will be moving faster. 10 का answer is A. Okay. A fixed mass of gas has a volume of this is your V1, and has a pressure of this is your P1. The gas expands at a constant volume, as a constant temperature to this volume, this is your V2. You have to calculate the new pressure P2. How will you do that? P1 V1 is equals to P2 V2. P1 की वैल्यू क्या है? 200 किलो पास्कल्स. लेट्स कीप इट 200. V1 की वैल्यू क्या है? 1.2. P2 हमने निकालना है. Volume V2 is 1.8. P2 comes out to be what? 133 kilo pascals. That is roughly equal to your option B. Let's further move ahead. The specific heat capacity of solid P is greater than the specific heat capacity of solid Q. What does this statement mean? What does this statement mean? Less energy is needed to raise the temperature by 1 degree centigrade? No. Less energy, no. More energy is needed to raise the temperature by 1 degree centigrade of unit mass of solid P than the mass of solid Q. C is your answer. बेटा हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी to increase the 1 degree centigrade temperature of mass P compared to solid Q. When water evaporates, what escapes from the surface of water? Water molecules. B is your answer. A sealed container of gas is heated. The pressure of the gas increase. Pressure increase हो रहा है. Okay. Which statement explains this increase in pressure? अच्छा जी, कौन सा statement explain कर रहा है this increase in pressure? The force of the gas particle striking the walls of the container increases. Force increase हो रही है. That's why pressure is increasing. 14 का answer is A. Let's further move ahead. The student has a copper rod and a wooden rod. Both rods have the same dimensions. The student puts one end of each rod into a beaker of crushed ice. ठीक है भाई, स्टूडेंट जो है वो दोनों रॉड्स को crushed ice में प्लेस कर रहा है. After a few minutes, the student picks up the rods by the ends, not in the ice. Which statement is correct? Copper feels ज़्यादा cold compared to the wooden rod because copper is a better conductor than wood. Yes, A is your answer. कॉपर अच्छा कंडक्टर है इसलिए इट विल लूज हीट जल्दी से. इट विल फील कोल्डर. 16 पे आ जाओ. द डायग्राम शोज अ ब्लैक ऑब्जेक्ट एक्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. द एरो रिप्रेजेंट्स द एब्जॉर्प्शन एंड emission of thermal radiation at the surface. Object Y is at the same constant temperature as X. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट Y है that is at the same constant temperature as X and is identical except that is a white surface. अच्छा जी, ऑब्जेक्ट Y क्या है? वाइट सरफेस है, सिर्फ ये फर्क है. Which row correctly compares object X with object Y? Rate of absorption for object X क्या होगा? Higher because it is a black surface. Rate of emission भी black surfaces का क्या होता है? Higher. A is your answer. बेटा हमेशा याद रखो, black surfaces are good absorbers and good emitters of heat. Let's see this. The diagram shows a cork with a weight attached to that cork floats upright in water. ठीक है. ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू वाई. अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एक्स टू वाई. परफेक्ट. इन विच डायरेक्शन डू द वेव्स मेक द कॉर्क मूव? किस डायरेक्शन में ये कॉर्क मूव होगा अगर ट्रांसवर्स वेव लेफ्ट टू राइट जा रही है?
बेटा अगर ट्रांसफर वेव लेफ्ट टू राइट जा रही है, ये कॉर्क अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करेगा. बी इज योर आंसर. लेट्स further move ahead. A thin converging lens is used as a magnifying glass. How does the image compare with the object? जब भी आपके पास magnifying glass होता है क्या होता है? Your image is virtual and upright. D is your answer. 19 पे आ जाओ. The diagram shows two plane mirrors at 90 degree to each other. ठीक है, ये plane mirrors लगे हुए. A ray of light is incident on one of the mirrors. The ray reflects of both mirrors before reaching the screen. ठीक है जी. रे क्या कर रही है ये स्टेटमेंट गौर से पढ़ो. रे रिफ्लेक्ट ऑफ बोथ मिरर बिफोर रीचिंग द स्क्रीन. At which label point does the ray reach the screen? किस point पे does the ray reach the screen? First of all, let's make the reflected ray like this. ठीक है, ये वाली रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ये एंगल है, रिफ्लेक्शन ये एंगल है, दिस गॉट्स रिफ्लेक्टेड. एंड यहाँ पे इफ आई रिमूव ये थोड़ा सा, लेट्स ड्रॉ द नॉर्मल अगेन. Let's say this is your normal. This is your angle of incidence. Where will be your reflected ray? Somewhat like this at point B. Easy peasy, lemon squeezy, nothing complicated here. The speed of light in a material is 50% of the speed of light in air. Let's say speed of light in air को हम कर देते हैं C. If your speed of light in the material is 50%, तो हम material में speed of light को कर देते हैं 0.5 C. What is the refractive index of the material? Refractive index of the material किस तरह निकालते थे? Speed of light in air divided by what? Speed of light in material. Speed of light in air क्या है बेटा? C. Speed of light in material क्या है? 0.5 C. C cancel out 1 over 0.5. That is 2 is your refractive index. A beam of white light is split into a spectrum of 7 color. Which name is given to this process? Dispersion. B is your answer. Satellites are sometimes used to receive and retransmit television signals. Which row shows the type of satellite and the electromagnetic waves used? बेटा हमेशा याद रखो, the type of satellite which is used for communication is what? Geostationary satellite. और कौन सी electromagnetic waves यूज करता है? D, that is microwaves. A sound wave travels through the air and strikes a solid block of steel. Okay. Say some of the sound is reflected from the steel and some of the sound is transmitted through the steel. Okay. How does the speed and wavelength of the sound in steel, which is a solid, compared to the speed and wavelength of sound in air, which is a gas? हमेशा हमेशा याद रखो, speed of sound in solid is much greater compared to the speed of sound in air, that is a gas. तो स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगी? ग्रेटर देन इन एयर. स्पीड इन स्टील इज ग्रेटर देन इन एयर. ए और बी कैंसिल आउट. अब बेटा हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. अगर स्पीड ज्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगी इन स्टील. डी इज योर आंसर. लेट्स फर्दर मूव अहेड. Okay, the diagram shows a bracelet containing two magnets. Okay, the arrow represents the pattern and the direction of the magnetic field due to the magnets. Which row identifies the magnetic pole at capital J? ये capital J पे कौन सा magnetic pole होगा? North. Which row identifies the magnetic pole at K? North pole. क्यों दोनों जगह पे north pole होगा? Because दोनों से बेटा magnetic field lines emit हो रही हैं. Both these poles are emitting magnetic field lines. And where the magnetic field line is the strongest? The magnetic field line is strongest closest to the magnet, that is X. North X कहीं लिखा है? Yes, A is your answer. Let's move on to question number 25. Which row describes an electric field and its direction? बेटा electric field की description क्या होती है? A region in which an electric charge experiences a force. Direction of electric field क्या होती है? Direction of force on a positive charge. A is your answer. 26 पे आ जाओ. Copper wire is available in fixed lengths but in various diameters. Each wire has a different resistance. Which relationship between R and D is correct?
रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई डी स्क्वायर ओवर 4। लेट्स राइट इट हियर, पाई डी स्क्वायर ओवर 4। लेट्स ब्रिंग 4 टू द टॉप साइड। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओवर पाई डी स्क्वायर। बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डायमीटर स्क्वायर। एनी आंसर्स लाइक दैट? इज योर आंसर? सिंपल, इजी पीजी, लेमन स्क्वीज। आगे बढ़ते हैं। द डायग्राम शोज 320 ओम रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3। अच्छा, ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, ये भी 20 ओम है। ओके, एंड अ स्विच एस कनेक्टेड टू अ डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच एस है। करंटली स्विच एस इज ओपन। ठीक है, स्विच एस ओपन है। व्हेन स्विच एस इज ओपन, व्हाट इज योर सर्किट? जब आपका स्विच एस ओपन है, दिस इज योर सर्किट। द ब्लू हाईलाइटेड रीजन इज योर सर्किट। The potential difference across R3 is 9 volts. By potential difference across R3 is 9 volts since it is a 20 ohm resistor. बेटा अगर 20 ohm के अक्रॉस, अगर R3 के अक्रॉस 9 volts है, तो R2 भी 20 ohms है. It will also have 9 volts. 9 volts plus 9 volts. What is the total voltage of the battery? 18 volts. Now switch S is closed. अच्छा जी, switch S को आपने close कर दिया. What is the potential difference? R3. Now you have to calculate the potential difference R3. How will you do that? बेटा जब आपने स्विच एस को क्लोज किया ना, लेट्स रेज एवरीथिंग, जब आपने स्विच एस को क्लोज कर दिया, व्हाट विल योर सर्किट लुक लाइक? this this. When you close switch S, can you realize ये 20 ohms और ये 20 ओम वाला रेजिस्टर पैरेलल में आ गया? यस, 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/RT। कैन यू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन? यस, 10 ohms. This is 18 volts. 18 volts into 10 ohms into 20 ohms. You have to calculate the voltage across this 20 ohm और R3. किस तरह करेंगे बेटा? रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे. 10 ohms plus 30 ohms, 10 ohms plus 20 ohms, टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 30 ohms. 30 ohms की रेजिस्टेंस इज गेटिंग अ वोल्टेज ऑफ 18 volts. 20 ohms की रेजिस्टेंस विल गेट अ वोल्टेज ऑफ x. कैन यू कैलकुलेट x? 18 into 20 divided by 30, 2 divided by 3, 1, 6, 12 volts. C is your answer. सिंपल, आगे बढ़ते हैं. The circuit shows all the circuit shown all include a DC power supply, one diode and two light emitting diodes LEDs. In which circuit will both LEDs be turned on? कौन से सर्किट में दोनों LEDs जो हैं वो टर्न ऑन हो जाएंगी? यस. इन विच सर्किट विल बोथ LEDs be टर्न ऑन? हाँ जी, कौन से सर्किट में दोनों LEDs टर्न ऑन हो जाएंगी? एनी आइडियाज? देखो, एलईडीज क्या होती हैं? दे आर लाइक डायोड्स. एलईडीज क्या होती हैं बेटा? ये देखो, डायोड्स की तरह बनी हुई है ना. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडीज, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडीज. लेट्स एनालाइज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल में ये आया आया आया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी पे टकराया. द करंट विल फ्लो थ्रू. ओके ओके ओके, इट पासेस थ्रू द डायोड एज वेल. डायोड के भी पॉजिटिव टर्मिनल पे. बट ऑप्शन ए में यहाँ पे आके एक मसला आ गया. The positive terminal of the battery coincides with the negative terminal of the LED. Both the LEDs will not light up here. Same is the issue with option B. Option B में positive terminal of the battery first LED के through तो चली जाएगी, but diode इसे रोक लेगा because diode has this negative terminal. Option C को देखते हैं बेटा. This is the positive terminal of the battery. Positive terminal of the battery LED के थ्रू गया, फिर डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू गया, फिर आपके एक और एलईडी के थ्रू गया. एंड क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्योंकि ऑप्शन सी में बोथ द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द एलईडी आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल इज आल्सो कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सी इज योर करेक्ट आंसर.
A wire connected to a resistor is moved in a magnetic field. Okay, वायर को हम मूव कर रहे हैं in a magnetic field. We are providing what? हमारे inputs क्या हैं? Force and magnetic field. What will be your output, बेटा? Output क्या हो जाएगा बच्चे? Output is your current. Okay, whenever this is the scenario, a current is induced. यहाँ पे लिखा हुआ भी है. In which direction is the wire move? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ, अगर आपके आउटपुट में करंट आ रहा होता है, विच लॉ डू यू अप्लाई? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर करंट इज गेटिंग इंड्यूस यू अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. कैसे अप्लाई करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. मेक योर फर्स्ट फिंगर लाइक दिस, नॉर्थ टू साउथ. योर करंट इज कमिंग आउटवर्ड लाइक दिस. Where will your force finger point? Yeah, where will your thumb point? Downward like this. C is your option. Make sure you apply Fleming's right hand rule. जब भी आपका आउटपुट में करंट होता है, you apply Fleming's right hand rule. Which component is not found in an AC generator? Coil of wire तो found किया जाता है. Split ring commutators are not found in an AC generator. इस AC generator में क्या होती हैं? Slip rings. AC generator में बेटा क्या होती हैं? Slip rings. Always remember that. A there is a current in a straight metal wire in the direction shown. Okay, current क्या जा रहा है? Out of the page. Current is going out of the page. Perfect. Which row describes the direction and the pattern of the magnetic field due to the wire when looking from above the wire? Pattern क्या होगा? Circular. Magnetic field क्या होगी? Anti-clockwise is your answer. A simple transformer contains an iron core. What is the function of iron core in the transformer? Iron core का क्या function होता है in the transformer? To conduct current? No. To enable secondary? No. To ensure that a high voltage? No. To link the magnetic field in the primary coil to the secondary coil? 32 का answer is D. Perfect. In an alpha particle scattering experiment, a beam of alpha particle is fired at a very thin piece of gold foil. In which direction do most of the alpha particle travel after hitting the foil? बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता था? as the particles hit the gold foil they pass undeflected. A is your answer. Easy. आगे बढ़ते हैं. an atom an atom of boron contains 5 protons and 5 electrons. The nucleon number is 11. How many neutrons are there in the atom? बेटा nucleon number क्या होता है? neutrons plus protons. Neutrons plus protons is 11. Protons कितने हैं? 5. न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? हाँ जी, न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? 11 minus 5 that is 6. B is your answer. A detector placed near a radioactive isotopes gives a count rate of 800 counts per minute. The half-life of the isotope is 3 hours. The background radiation is 32. What is the count rate on the detector after 6 hours? तो बेटा 800 में से आप 32 माइनस कर दो. What will be your answer? 800 minus 32. This is your actual reading. ये आपकी actual reading है of count rate. Actual count rate. Now what will you do? After 3 hours ये कितना count rate हो जाएगा? Half हो जाएगा. 768 divided by 2. This is 384. After further 3 hours ये क्या हो जाएगा? Further half हो जाएगा. This becomes 192. But you will not give your answer as 192. Why? Because आपने background radiation भी तो add करनी है. Plus 32. Your final count rate will become 224 along with the background radiation. C is your answer. Okay, sodium 14 is a radioactive isotope that emits beta radiation. Which nuclear equations show how sodium 14 decays? Sodium 14 किस तरह decay करेगा? The proton number will increase by 1, mass number remains unchanged, product में beta negative particle भी आ जाएगा. A is your answer. Which safety precaution must be taken when using a source of gamma radiation? Reduce the distance between the source and the person? No, you don't have to die. Reduce the time of exposure? Yeah. Use a suitable shielding method? Yes. 2 and 3 are correct. Okay. A student define 3 periods of time.
The time is taken for Earth to orbit around the sun, that is 365 days. Okay. The time are taken for the Earth to orbit, या rotate once around its axis, that is 1 day after 24 hours. The time TM taken for the moon to orbit around the Earth, that is 28 days. Okay. It is the shortest period of time, TR. So A or D cancel out. Which is the longest period of time? 365 days. That is TSB is your answer. Simple. Which statement about the universe is correct? The universe consists of 1 lakh galaxies. No, I don't know about that. I will confirm when I go on expedition in space. Redshift is the decrease in wavelength. No. Light emitted from the distant galaxy appear redshifted. Yeah. 40 पे आ जाओ. Which statement about cosmic background radiation is correct? Cosmic microwave background radiation now has a frequency. No. Microwave background radiation has a no. Cosmic microwave background radiation had a shorter wavelength in path. I agree. As time has passed, the radiations are moving away. Their wavelength has increased. 40 का answer is C. That's it for this paper. If you have any questions, you can ask below.